when we were starting, for the first 3 months, we didn't get any order. Now what has started happening is, with the Western influence, women have started seeing jewelry as a form of fashion accessory rather than an investment. Okay. Because there are multiple ways if you want to invest in gold and silver bullion. Yeah. Like you have ETF bonds, sovereign bonds, etc., where you can actually invest in digital gold and you get 2% yield year on year. Concept of wearing very, very heavy jewelry that you would see back in the older days is going away, and the concept of wearing minimal, fine, day-to-day wear jewelry that you can wear at multiple occasions is coming. साउथ इंडिया में गोल्ड की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया? आप ना कोई भी ज्वेलर नहीं देखोगे हाँ, अपने शहर में जो कि पैसे वाला नहीं होगा। हाँ, सब पैसे का। सबके रेवेन्यूज इतने अच्छे हैं, सबने स्कूल कॉलेजेस खोल रही है, मतलब वो नेक्स्ट लेवल ऑफ वेल्थ पे जा चुके हैं। करेक्ट। अभी हमारे कुछ अराउंड 89 स्टोर्स हैं और इसमें से 86 स्टोर्स आर ऑल प्रॉफिटेबल। और लाइक पर मंथ कितना रेवेन्यू जनरेट करता तो है? पर स्टोर ऑन एन एवरेज पर मंथ अराउंड। How did you choose Anushka as a brand ambassador and how did you convince her? Hi, this is Siddhartha Ahluwalia and welcome to The Neon Show. Silver Jewellery is a $4 billion opportunity in India. His company is a category leader in silver industry that has less than 7% organized market share. In fact, their brand ambassador is Bollywood's Anushka Sharma. It's my pleasure to welcome GIVA's Ishendra Agarwal on The Neon Show. I would also like to thank the sponsors, Prime Venture Partners, for sponsoring The Neon Show. Hope you enjoy it. Ishendra, welcome to the podcast. So excited to have you today. Thank you. Thanks a lot, Siddharth, for having me here. Thanks a lot. So Ishendra, you're in a very interesting category, right? Mm-hmm. Silver jewelry. India as a country, right? We have only focused on, mostly gold jewelry. And the utility of silver has been utensils in a parent stage. And now the trend is changing and you are leading that trend. So tell us about, right, how did valuable metals like gold and silver came into human history as a store of value? Yeah. So essentially, the way gold and silver emerged is, if you look at if you go back to the history, gold and silver, being a rare metal, were used in the form of coins, in the form of currencies. Yeah. Because there is a limited availability of these metals, so people would use them for, as a store of wealth. Yeah. And then eventually what happened is, because they were metals, women were also using these metals to make jewelry pieces. Yeah. And this would become a store of wealth for a woman, because if, let's say, a woman gets married, then essentially, if you look at 20-30 years before journey, then women would stay at home and she would do her work. Yeah. Right. So then for her to store her wealth, jewelry would be one form of element, right? Where she would buy multiple jewelry pieces, and whenever anything would happen, then her jewelry would be used. Which is why you will see a lot of brands have jewelry buyback as their programs, etc. And which is where you will see gold and silver being used in jewelry, in utensils, in a lot of these places. Yes. And then along with that, people also started, exchanging gold and silver in some of the auspicious events like Dhanteras. We are very popular, like Dhanteras is a very big event. Then Akshaya Tritiya is another very big event. Women, people also give their sisters some form of silver gifts or gold gifts during Raksha Bandhan as well. So the existence of gold and silver came from the rarity, but then they were always used as a store of wealth because they were not abundantly available, and they were easy for a woman to carry also, because they were casted into jewelry, which used to be an article which men and women would wear, but women would largely wear. So that is how it became a currency, which is a store of value for people. And if we study history also, like when humans were tribesmen or tribeswomen, if they had to shift base from one area to another, the only thing they could carry is the store of wealth, which was correct. It is easy to carry gold and silver with them rather than a land, etc. Because you can't carry it. Land is fixed, and if anything happens, any kingdom would occupy another kingdom. You can just take away your gold and silver, and then you could go to another place and start a settlement. It was a universal currency. Like even now, countries have gold store against their reserves, right? So it was a universal currency which would be accepted everywhere because of the rarity of the metal. So yes. And the second reason also why, they became super popular is they are a noble metal. Yeah.
So like even if you wear them in jewelry or use them, they would not cause any allergies, infections, no reactions. Nothing will happen to them even if you keep them for longer durations. Unlike other metals which either will evaporate Yeah. or will tarnish. So that was the other characteristic of the metal, which also led it to become a jewelry specific element or an element which can be a store of wealth. And Also, tell us about your own experience and how you have observed that. How has Indian, especially related to India's context, the Indian use of gold and silver evolved over a period of time? yes. So, interestingly, if you see the market of gold and silver in India, it's huge, right? Even now, India is world's top three consumer in the Okay. of gold and Does silver. India export gold and silver or No, so imports? India imports. So India imports the raw metal, but then they make jewelry, etc., and then they export the jewelry because a lot of craftsmanship happens in India, Yeah. but the metal comes from outside. But even now and historically, jewelry used to be a big, storage of wealth in India. Largely because India was again ruled by multiple kingdoms Yes. back in the ancient days, where those kings will have gold and silver as their storage of wealth, and then even after that, women, traditionally in India have been always told that jewelry is a very good investment. Like if you Yeah. store certain money, then it is good to get a jewelry out of money because that jewelry will stay with you, will help Yeah. you in tough times, etc. That has been the lesson. Usually in earlier days, people used to tell women, and because of that, the use of gold in jewelry and silver in utensils, your worship, जो Yeah. मूर्तियां होती है, right? In all those things have been largely used. Uh, but what started happening is, and even in earlier days, you would see whenever a woman would get married, then her you know parents or parents-in-laws Yeah. would give them jewelry, Yeah. would give them a significant amount of jewelry, etc., because that would be a way to give wealth to Yeah. a woman, right, by their parents or Yes. parents-in-laws, right? So but now what has started happening is women now are slowly, with the Western influence and with the influence of where fast fashion, women have started seeing jewelry as a form of fashion accessory rather than an investment. Okay. Because what government has also done is there are multiple ways if you want to invest in gold and silver bullion. Yeah. Like you have ETF bonds, you have other sovereign bonds, etc., where you can actually invest in digital gold and you get 2% Got it. yield year on year. So now, and with the women also modernizing, getting into jobs, getting into startups, getting into multiple other fields, they've also realized the better form of investment is actually sovereign bonds, etc., for gold, versus jewelry for them is more like an accessory, right? Got it. Which is where you would see that the concept of wearing very very heavy jewelries, all those heavy jewelries that you would see back in the older days is going away, and the concept of wearing minimal fine day-to-day wear jewelry which you can wear at multiple occasions is coming in. So yeah, that is the shift in the trend that is happening in jewelry, and that is also in some sense promoted by government, as you said, because India largely imports the raw metal. Yeah. So it doesn't make sense to import so much of raw metal. Yeah. You can have a digital metal as well, which is where they have launched sovereign bonds, etc., where you can give your metal to the government, which can be backed against their reserves, etc., and then they can give you certain interest over that. So that is also something which has been driven by government and even by fashion trends as well, which is where you see a lot of minimal fine jewelry coming in trend as well. And these bonds are not really popular, right? Like, what part of India, if you say, invest in jewelry in very physical sense, both Yeah. gold and silver, and what part of India would have, uh, investment in these kind of bonds? So you're right, not too popular right now, but it's gaining well. So like there was this new sovereign bond scheme that government recently launched, Yeah. and we saw gold prices, going up because Okay. people, suddenly was showing interest. But it is largely specific to tier 1 metros, the concept Yeah. of bonds. Uh,
that is very largely specific to tier 1 and metros, but that is slowly and slowly increasing. And secondly, what has also started happening is you see a lot of finance related tools, like there's multiple Muthoot Finance, multiple finance companies who give you loan against the gold, and then they use that gold reserves, but and give it back to the banks, etc., and then take loan against those reserves also. So those tools were existing even before, and they have a very deeper penetration. So like the gold loans even exist in tier 2, tier 3. Yeah, very popular. Very, very popular. The pawn bonds, shops. yeah, the pawn shops, you're right. The bonds is a new phenomena, which is where you can actually directly give to the government. Earlier, it used to be an indirect way, which has now become a direct way. Got it. So, yeah. But we have never seen a silver pawn shop. Yeah. Why is that? So silver, if you see, has been largely used in utensils and coins, because there you actually consume a large silver metal. So like if you see the cost of silver, it is around 70,000 rupees a kg. Yeah. And if you use it for jewelry, in jewelry you will consume at max 5 grams, 10 grams. Yeah. So there's no significant value in the jewelry. Versus in utensils and coins, you will consume 1 kg of silver, 2 kgs of silver. So that will essentially store some wealth. So which is why you will see, for the investment purpose, people actually carry utensils, they carry coins of silver, they carry all the goddesses of silver, etc., all those sculptures of silver. But jewelry in silver was not something there, because it is light, for silver, versus in gold, which is very expensive. It's 6,000 rupee a gram. So for there you would see a lot of jewelry in gold. So what you are also essentially saying is, till India, if you see from independence from 1950s to 1990s, because India was essentially a capital-starved country, right? Whatever capital the families could save, they could store in fixed deposits, and in gold. Correct. And in gold. And secondly, also because in India, the people used to transact a lot in cash also. Not everything would go in bank. And if you want to settle cash, one used to be land, the second used to be gold, silver, etc. So that also used to be another form of investment for people to keep their cash reserves, rather than keeping a direct cash as well. So I want to take a step back, right? Because of your so in-depth interest in silver and gold. Which is the city that you grew up in? So I actually was born and brought up in Agra. Okay. Yeah, the city of tier 2 or tier 3 town in Uttar Pradesh. Yes. Yeah. And famous for its mithai. It's famous for the petha. Yeah. It's also famous for a lot of handicrafts work. There's a lot of marble handicrafts that happen, and it is now becoming famous for even leather work. Okay. So you see a lot of small karigars in Agra as well. So and your father has been a serviceman or a businessman? My father has been a businessman. Actually, I come from a business family, and so in my entire so I was at my home till I was 18. After that, I went to college. And how did when you were surveying the market, right, to start a silver jewelry business, how did you stumble upon this? Because it's a completely unheard of. Like, I can understand somebody starting a gold jewelry business because it's a very large market. But this looks like from periphery back when you started a very small market. So you're right. If you look at it from outside, and this is what you get. So I'll tell you a bit more about how I stepped into this. So when I was in my college in IIT Kanpur, that was, I was very clear that karna to khud ka hi kuch hai. And then I actually started 2 businesses of my own. One was in the social media space, one was in the general media space. None of them worked. So back there, then I realized that maybe, the research that I'm doing on something that I want to start is not sufficient. I am directly jumping into a problem and thinking of it as a problem, which is not really a problem, right? So maybe I need to do a bit of research and then go deep into it. So then post that, I joined Boston Consulting Group, because I heard consultants work before joining BCG. I heard consultants work directly with the CEO. They get a view of the problem in much more detail, etc. And then when I was working there, I was working largely in the consumer space. There, in one of the assignments, actually, we were speaking to all the possible businesses which exist in India, like all the possible spaces, be it leather space, be it hair care, makeup, skin care, jewelry, everyone.
and trying to understand the problems that Yeah. the people were facing. And what I realized is, this was about 7 years before. In skincare, makeup, hair care, there were so many brands that were coming in because India was going through this transition of international brands to homegrown brands Yeah. that would grow. Right. But in jewelry, there were very few brands that were doing something good in the fine jewelry in this price range. And that's when I also went deeper and to understand what is happening in US and Europe. Because one key thing that a consultant would do is international benchmarking. What is happening in these developed countries, what is happening in India, so that you can at least get a correlation Yes. of what could you expect. And then I realized that US and Europe, mein people just buy fine jewelry at not so high prices. They don't invest 50,000, 1 lakh to buy a jewelry. They just buy it for 10,000, 20,000. Or unless it is a wedding ring, etc., where they would go for an expensive jewelry. For their day-to-day jewelry, it would be 10, 15,000, 20,000 rupee budget. Like $100 to $200 budget. And then when I was looking at it from India perspective, I realized there's no fine jewelry brand in this range. So still I was not convinced, to be honest. So then I thought there must be something I'm missing, because this doesn't sound like a very amazing insight. Someone would have tried it. So, I just joined Guild Capital back then, which was an early stage VC. And then I was speaking to many startups in the consumer space, in the SaaS space. And then I spoke to many startups in jewelry also. So then what I realized is a lot of people failed because it's also a jewelry business, which is a fine jewelry, but it's also a fashion business. So you need to manage inventory well. And second is, building a brand is in itself a big problem, where you need to be very, very clear on what you're building on, which was a vision which was lacking in multiple founders. So once I got that clarity, this space really is attractive, and I was convinced with the research. That's when I started GIVA. And basically, there was no competition to GIVA, right? Back then. And Kushal, which is the second company in this space, which is Recognizable brand, is purely offline. Yeah. Right? Yeah. So essentially, you were replacing the artificial jewelry. Yes. You were not replacing gold jewelry. There was no silver jewelry to be replaced of. And artificial jewelries there was never a brand for artificial jewelry. Or plastic, even jewelry which is plastic or semi-metal in nature. And this used to get sold at small shops all across India, especially in tier 2, tier 3. Yeah. So actually, you're right. So what we were doing is, when I was starting before that, I looked at Amazon. So Amazon has this top 100 bestseller in every category. I looked at India top 100 bestseller, and there was one silver product and rest all were artificial. Okay. And I looked at that similar data for US and for Germany. US had 46 silver products out of 100 in this jewelry category. And Germany was about 48. Correct. And that was the time I thought, why is India having so less products and US and Europe have, these high products? There may be one reason why, things will migrate towards that. And you're right, because there were very, very few brands in silver, and all of them were family-owned business, had a very limited scale, limited vision. So they were very much focusing on what they were doing in just one shop or two shop. Like you would see so many Sunhar ki dukaan, which used to sell silver a lot, right? But you would not see a large brand of silver. Yeah. Versus in gold, you would see so many large brands also, along with the small shops. So then, what I realized is, the problem in this segment is in gold, because you have so many brands, right? You have Tanishq, Kalyan, Malabar, who are setting the standards of quality, setting the standards of this is the serviceability we need to give to the user, we need to offer buyback to the user, etc. In silver, because there's no brand, all these small shops are just doing their manmani. Yeah. They are just selling whatever purity that they would commit to a consumer, but consumer was forced to buy. Yeah. So it was not like people were not aware about silver. It was just that they had these local people did not have any competition or anyone who was setting those standards for silver on which they would operate. And that was happening in the market. And that is the problem that we were trying to solve also, eventually, when we started GIVA. That we wanted to give those standards that you would find in gold and diamonds in silver as a category, so that at least, the perception of silver becomes more towards jewelry, and
women are more acceptable because there are these standards. You will get a jewelry, at GIVA, you will get a jewelry of the same look and feel, of the same quality that you will get in gold and diamond. So that was our vision statement, that we have to create those standards for the category, because uh, already people are aware about it. And how did you make GIVA into such a recognizable brand? What went behind in building the distribution machine at GIVA? So I think this is a journey, and we are still very, very early in the journey. It's an ongoing journey. Uh, I think one big lever for this journey is obviously the right people, because it's very tough to do everything alone. I've been fortunate that we got the right people who were carrying the same vision, or who at least had the purpose of creating something big. But one big thing that we realized in jewelry, which is very important, is trust and quality, right? So you need, because jewelry is a very small element in the women's entire attire, right? If you wear a shirt, that is a very large element, like you would see it prominently, but jewelry is a very small element. But it's a very emotional element. Like, people use jewelry to gift during proposal, or during wedding, or someone would wear jewelry for gifts, etc., would give it for gifts. So it is very special to people. And when something is very, very special to people, then you cannot really mess up with the quality. You really cannot mess up with the brand promise. You have to serve it in a very special way. And that has been our thesis all throughout. Like, when we started GIVA, we said, no, all our jewelry will be 92.5% pure. Will have our authenticity certificate with every jewelry. Then we will give 30-day no question asked return policy. We have even now launched lifetime plating guarantee as well. Like, even if you lose plating, it is all covered. Even the experience with which your jewelry will come, the packaging will be best in class. Like, is there a buyback also? So that is something that is on cards, of jewelry buyback. And that's something we are figuring out. So right now the focus is on building again, these initiatives even stronger. And then yes. And when did your first offline store came up? So it came up about 14 months before. Oh, very recent. Very, very recent. Yeah. We've grown quite a lot in offline over the last 14 months. And how many stores you have right now? So right now we have around 89 company-owned stores of our own. Okay. And then we are there across 67 store-in-store counters with Shoppers Stop and Pantaloons. And what are the cities that you are present in? So we are quite deep in Bangalore, where we have around 24 stores. Very deep in Delhi, where we have around 23 stores. Then, we are there in Pune, Hyderabad. We have 3 stores in Lucknow, 2 in Dehradun, and 2 in Indore, and in 3 more cities. Understood. And how, it's very interesting, right? How did you choose Anushka as a brand ambassador, and how did you convince her? So that has been quite a journey. So in fact, when we started, we started initially. So in fact, when we were starting, for the first 3 months, we didn't get any order, right? And then I was so tense, what is happening? Whether I've entered into the wrong space. Whether this is a third business that will fail. This is another failure, and this was a big failure, right? Because I left my job, and I also deployed all my savings into the business, etc. So then I invited 2 of my relatives to my home, and then 2 friends of mine also for a dinner, and I showed them the jewelry after having dinner, and each of them bought 10,000 rupees worth of piece back then. So that was the first order that I got. And that was the moment I realized that there is a pull in the product. Maybe, I need to now figure out the marketing element of it. Because before that, I didn't even know whether, marketing mein kuch karna hota. What I thought was, you create a website and then product will start selling on its own. Right? So that was the time I was introduced to marketing. And when we started, initially, we started with the approach of partnerships, where we were there at Cred, we were there at Steps at Go, we were there at multiple partner portals, where your early adopters would just get a discount coupon and then would experience the product, and we would get a feedback. But then once we established the PMF, and then we were going to the middle layer of the people where trust really matters. That is when we realized that if you go to tier 2 cities and tier 3 cities, with the normal, simple creatives of yours, and if you say that we are a silver brand, lifetime
warranty, 30 days no question asked return policy, etc. Versus where Anushka says that 30-day no question asked return policy, it's a silver brand. The second approach had a much wider trust versus the first approach. And the amount of money we were spending on marketing was quite a lot, right? So whatever we were paying, whatever the association with her was not that much compared to the incremental benefit that the brand had. So that was the time we decided we'll, go with the celebrity. We started initially with Neha Kakkar with the smaller experiment. And then once this thesis was proven, then we went towards Anushka because we realized she carries a very strong image, a very fashionable image, a strong women image. And then we could, our brand positioning would turn to a premium brand. Our CTRs and conversions of the ads would improve significantly. So then after that, it was all just, chasing, convincing them, etc. And that happened luckily. And then since then, Anushka has been with us. You went to Mumbai to meet Anushka to sign the final contract? So for the contract, we were directly in touch with the agency. But yeah, for the shoots and all, we went and met her. But it was just like, I spoke to Anushka once before the contract was signed. And I was pitching about the vision, about the brand. And she was also very, very excited about it. But along with me, I also convinced her manager that this is what we want to do. And they were also very excited. So then they also helped me in convincing Anushka to endorse. तो अभी हम एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया का ज्वेलरी मार्केट कितना बड़ा है और कितना ऑर्गेनाइज्ड है, कितना अनऑर्गेनाइज्ड है और कौन कितना ओन करता है. सो अगर आप अभी इंडिया का ज्वेलरी मार्केट देखोगे, राइट, तो बहुत बड़ा है. इट इज़ ह्यूज. इट्स $100 बिलियन का पूरा मार्केट है. $100 बिलियन करोड़ों में कितना हो गया? आपका कितना हो गया? 80,000 8 लाख, सॉरी. नहीं 1 बिलियन हो गया 8,000 करोड़. 80,000 करोड़ 8 लाख करोड़. 8 लाख करोड़. हाँ, तो लगभग आपका 8 लाख करोड़ का मार्केट है. और टाइटन की मार्केट कैप हमारी लगभग टाइटन का रेवेन्यू जो है, इट्स अराउंड 25,000 करोड़ टू $4 बिलियन टाइटन का रेवेन्यू. मोस्टली फ्रॉम ज्वेलरी. सो टाइटन का भी सिर्फ 5% मार्केट शेयर है पूरे ज्वेलरी मार्केट में. So इतना बड़ा मार्केट है. द मार्केट इज सो ह्यूज दैट इवन टाइटन विच इज द लार्जेस्ट, उनका सिर्फ 5% मार्केट शेयर है. नाम काफी सही है वैसे, टाइटन. मार्केट के टाइटन ही है. हाँ, टाइटन सबसे बड़ा है. फिर उसके बाद मालाबार है. मालाबार इंडिया में बड़ा है, बट वो मिडिल ईस्ट में और भी ज़्यादा बड़ा है. बट ये पूरा ऑर्गेनाइज मार्केट अगर आप देखोगे, विच इज टाइटन, मालाबार, कल्याण, कैरेट लेन, ब्लू स्टोन, PC ज्वेलर्स, एक्सेट्रा, ऑल ऑफ देम कंबाइंड, उन सबका सिर्फ टोटल 10% मार्केट शेयर ही है. मैं मेरठ से हूँ वैसे. अच्छा. तो मेरठ में सबसे बड़ा मार्केट वो ज्वेलरी का ही मार्केट है. सारे जैन और अग्रवाल के ये दुकानें हैं. अरे तो आप ना कोई भी ज्वेलर नहीं देखोगे अपने शहर में जो कि पैसे वाला नहीं होगा. सबके रेवेन्यूज इतने अच्छे हैं. सबने स्कूल कॉलेजेस खोल रही है, मतलब वो नेक्स्ट लेवल ऑफ वेल्थ पे जा चुके हैं. करेक्ट. तो बिकॉज अनऑर्गेनाइज मार्केट इतना बड़ा होता था आज से 10-20 साल पहले, क्योंकि ज्वेलरी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ट्रस्ट. आप अगर किसी से ले रहे हो तो यू हैव टू ट्रस्ट कि दे आर गिविंग यू प्योर ज्वेलरी. बिकॉज आपको जब कोई ज्वेलरी बेच रहा है वो कहे से 100% प्योर है वर्सेस 80% प्योर है, यू विल नॉट गो टू द लैब एंड टेस्ट इट. आप उसको रख लोगे उसके ट्रस्ट के बेसिस पे, राइट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसीलिए ये लोकल ज्वेलर्स का इतना बड़ा मार्केट शेयर है. बट इंटरेस्टिंगली पिछले 10 साल से सबसे बड़ी चीज़ जो हो रही है वो ये है कि मार्केट धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होता जा रहा है. बिकॉज जैसे जैसे लोकल ज्वेलर्स की नई जनरेशन आ रही है, कुछ लोगों की नई जनरेशन थोड़ी ग्रीडी हो रही है, तो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी डिप्लीट हो रही है. उससे पीपल आर लूजिंग ट्रस्ट ऑन द प्रोडक्ट. वेराज ये जो बड़े ब्रांड्स हैं जैसे टाइटन हो गया, मालाबार हो गया, कल्याण हो गया, हम लोग हो गए, हमारे इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं ऑन क्वालिटी चेक, ऑन इंश्योरिंग दैट द प्रोडक्ट दैट वी सेल इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी एक्सेट्रा. तो पीपल ट्रस्ट अस मोर देन द लोकल ज्वेलर. तो इसीलिए ये जो मार्केट है ना, ये अनऑर्गेनाइज से धीरे धीरे ऑर्गेनाइज काफ़ी तेज़ी से हो रहा है. अभी जैसे आपने बताया 8% के करीब मार्केट है, जो 8 से 10% का मार्केट आपका ऑर्गेनाइज्ड है ये पूरे 8 लाख करोड़ के मार्केट में. और उसमें रेशो क्या है गोल्ड और सिल्वर का इस समय? सो आपका पूरा जो मार्केट है उसमें अराउंड 12 से 13% जो मार्केट है वो सिल्वर का है. लगभग $12 बिलियन. 12 बिलियन. तो अगर आप सिल्वर का कंजम्पशन देखोगे लास्ट
last year if you look at the silver consumption in jewelry only, so it was around 2,300 tons. So 2,300 kilo silver was used in jewelry, which together amounts to about 8 billion of market. Okay, just the cost of Just the raw metal cost, making labor cost. और उस पर 40% का आप हाँ. मार्जिन जोड़ दो, मैन्युफैक्चरर का 40-50% का रिटेल मार्जिन, तो वही 8 से 10 बिलियन का मार्केट है सिल्वर का. और गोल्ड और सिल्वर में एक चीज़ फ़र्क है, जैसे एक अनऑर्गेनाइज मार्केट में Yes. जो मेकिंग चार्जेस होते हैं, कि आप किसी अगर ज्वेलर को जानते हो 10% मेकिंग चार्जेस लेगा, Yes. कैरेट लेन तनिष्क 20-25% लेंगे, सिल्वर में ये चीज़ 40% क्यों है? हाँ, तो इसका रीज़न ये है कि बिकॉज अभी आप उसको पर्सन की तरह देख रहे हो. सो अगर आपका पर ग्राम रेट ऑफ अ मेटल अगर वो 6,000 रुपये, तो उसका 10% हो गया आपका 600 रुपये. हाँ. राइट. अगर आपका पर ग्राम रेट मेटल सिल्वर के केस में 70 रुपये है, हाँ. तो उसका 40% हो गया आपका 30 रुपये. हाँ. राइट. जैसे सिल्वर बनता है वैसे गोल्ड बनता है, प्रोसेस पूरा सेम होता है. राइट. देयर इज द सेम अमाउंट ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप दैट गोज इन गोल्ड एंड सिल्वर. कुछ भी डिफरेंट नहीं होता उसमें. जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है वही होता है कि सिल्वर थोड़ा ऑटोमेटेड होता है, थोड़ा मैकेनाइज्ड होता है, 3D प्रिंटिंग उसमें काफ़ी यूज़ होती है एक्सेट्रा, वर्सेस गोल्ड वेस्टेज थोड़ी कम होती है वर्सेस गोल्ड. तो इसीलिए बिकॉज द पर यूनिट प्राइस इन गोल्ड मेकिंग इज 600, सिल्वर में वो 30 रुपये है. वो आप परसेंट में देखोगे तो हाई दिखेगा, लेकिन एब्सोल्यूट लेवल पे वो बहुत कम है. अच्छा, तो मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी खरीदता हूँ और 1 ही लाख की सिल्वर ज्वेलरी खरीदता हूँ, तो आप कह रहे हो गोल्ड का मेकिंग चार्जेस ज़्यादा होगा सिल्वर से? हाँ, नहीं. सो आप अगर 1 किलो गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हो वर्सेस 1 किलो सिल्वर ज्वेलरी खरीदते हो, तो गोल्ड का मेकिंग चार्ज सिल्वर से 20x होगा. ओके, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. क्योंकि 1 किलो, जबकि बनाने में एक ज्वेलरी पीस जो 6 ग्राम का बनेगा, वो गोल्ड में आपका 6 ग्राम का गोल्ड में भी बनेगा, 6 ग्राम का सिल्वर में भी बनेगा. गोल्ड में यू विल पे 3,600 रुपीज़. सिल्वर में आपका मेकिंग जो जाएगा उसका वो 30 रुपया ग्राम से कुछ अराउंड 200 रुपये जाएगा. 180 रुपीज़ विल बी द मेकिंग चार्ज. सो दैट इज द स्केल डिफरेंस. आई थिंक आपके बिजनेस में दैट इज द मार्जिन, राइट, जो मेकिंग चार्जेस है सबसे बड़ा. करेक्ट. सो दैट इज द वन मार्जिन दैट वी हैव. बट यू हैव एनी अदर मार्जिन आल्सो इसमें बिजनेस में? सो एक तो ऑब्वियसली ऑन द मेकिंग चार्ज देयर इज अ मार्जिन, एंड देन वी डू अ सर्टेन मार्कअप ऑन द प्रोडक्ट. तो वहाँ से हमारा थोड़ा मार्जिन बनता है. तो या दो ज़्यादा. अब जो एक फंडामेंटल चीज़ है बिजनेस की, जिसकी वजह से हमने जो सुनारों की दुकान है, ज्वेलर्स की दुकान है, सिल्वर को डेडिकेटेड नहीं देखी है, एक वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू की. यस. ठीक है, क्योंकि गोल्ड में एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू $1,000 या 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये होगी. सिल्वर में वही एवरेज ऑर्डर वैल्यू $100, 6,000 या 8,000 रुपये होगी. तो इसको कैसे सॉल्व करते हो आप अपने बिजनेस में? क्योंकि आपने स्टोर ले लिया 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट का या उससे छोटा, बट कॉस्ट तो स्टोर चलाने की वही है. और एक पर्सन जो परचेज करना रहा है वो ऐसा नहीं है कि एक बार में मैं 10 सिल्वर का आइटम खरीदूंगा. तो गोल्ड का 1 खरीदे, सिल्वर के 2 या 3 खरीदे. हाँ, तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है. तो जब भी व्हेनेवर पीपल एंटर अ जीवा स्टोर, वो एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, मिनिमम 2 प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. बिकॉज ऑफ द प्राइस रेंज, लोग इतना सोचते नहीं है खरीदने से पहले. अगर उनको इतनी कोई डिज़ाइन पसंद आ रही है तो फिर वो ले लेंगे उसको. 1,000 रुपये से मिनिमम. हाँ, 1,000 रुपये से लेके 10-12 हज़ार रुपये तक में उनको कुछ भी अगर पसंद आएगा तो देन वो लोग खरीद लेंगे. उसको इतना सोचेंगे नहीं. वर्सेस गोल्ड में क्या होता है, लोग ना अपने मेंटल बजट के साथ आते हैं कि अभी मेरा मेंटल बजट है 40-50 हज़ार रुपये और इसमें मुझे कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं खरीद लूँगा. इट इज़ नॉट कि हाँ मेरा अभी कोई बजट नहीं है, बेस्ट चीज़ दिखाओ. गोल्ड में ये होता है कि एंड नहीं है गोल्ड में. एग्जैक्टली, क्योंकि बेस्ट में तो आप कितना भी कर सकते हो. लोग सबसे पहले बजट बताते हैं वहाँ कि मेरे को 20,000 से 60,000 के बीच में कोई पीस दिखाओ, एंड देन दे पिक. वर्सेस सिल्वर में वो बजट नहीं होता. तो वहाँ पर वी सेल मल्टीपल पीसेस टू द पीपल. बट फिर भी आप मैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि मान लो अगर गोल्ड, या तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा एंटर कर रहे हैं पर स्टोर में पर डे, क्योंकि अगर गोल्ड में एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1 लाख रुपए पर कस्टमर जो जा रहा है, सिल्वर में वही अगर 2 या 3 चीज़ें भी खरीद ली तो भी 15,000 हो गया मैक्स. हाँ, तो इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि एक तो मैं आपको पूरे स्टोर का यूनिट इकोनॉमिक्स का बताता हूँ. तो हमारे स्टोर में लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा लोग आते हैं कंपेयर टू आर इक्विवेलेंट कैरेटलिन/ब्लूस्टोन टाइप ऑफ अ स्टोर. क्योंकि नंबर 1, द नंबर ऑफ टाइम्स पीपल परचेज
जीवा ज्वेलरी इज मच मोर देन दैट। सेल कोई गोल्ड साल में एक बार एट मैक्स खरीदेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खरीद लेगा, वर्सेस सिल्वर लोग 4-5 बार भी खरीद लेते हैं साल में। जब भी कोई ओकेजन आएगी लोग सिल्वर खरीद लेंगे, इट्स अ गो टू प्लेस फॉर देम। तो द फ्रीक्वेंसी इज मच हायर, द रिपीट्स आर मच हायर ऑफ अ सिंगल यूजर ऑल्सो, मतलब वो काफ़ी बार खरीदते हैं। सेकेंड थर्ड द ग्रॉस मार्जिन इज बेटर देन गोल्ड, बिकॉज गोल्ड में क्या होता है, अगेन आपका 6,000 का प्रोडक्ट है, उसमें आपने 600 रुपये का लेबर चार्ज लिया, उसके ऊपर आप मार्कअप करोगे कुछ एक्स्ट्रा, राइट। तो आपका नेट मार्जिन प्रोडक्ट पे 30-40% का बनेगा। वैसे सिल्वर पे आप, क्योंकि आपका मेटल की कॉस्ट इतनी नहीं है, तो आपके मार्कअप्स हाई हो जाते हैं प्रोडक्ट पे, तो आपका मार्जिन स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है। तो इवन एट अ लेसर सेल यू एंड अप मेकिंग अ लॉट मोर मनी इन सिल्वर देन इन गोल्ड। सो फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे कुछ अराउंड 89 स्टोर्स हैं, और इसमें से 86 स्टोर्स आर ऑल प्रॉफिटेबल एंड दे आर ऑल। लाइक पर मंथ कितना रेवेन्यू जनरेट करता तो है? पर स्टोर ऑन एन एवरेज पर मंथ अराउंड 14 से 15 लाख का आता है हमारा सेल। और उसमें हमारे स्टोर्स पे बैक जो रहता है स्टोर का, जो अपफ्रंट फिट आउट कैपिटल और इन्वेंट्री और डिपॉजिट सबका खर्चा एक सेटअप होता है, वो 12 से 14 महीने में हम रिकूप कर लेते हैं एक स्टोर का। तो आपका भी ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या रेशियो है इस समय? अभी मेजॉरिटी बिजनेस इज ऑनलाइन, अभी हमारा 70% बिजनेस ऑनलाइन है। ऑफलाइन हम लोगों ने 15 महीने पहले ही स्टार्ट किया था, एंड हम लोगों ने बैंगलोर से स्टार्ट किया था। वी सेटअप 4 स्टोर्स इन बैंगलोर। जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो उस पॉइंट पे हमारी ये थीसिस क्लियर थी कि हमें ज़्यादा सिटीज़ पे नहीं जाना, लिमिटेड सिटीज़ में रहेंगे लेकिन डीप जाएंगे, या बिकॉज व्हाट वी रियलाइज्ड इज वी वांटेड टू सॉल्व फॉर आवर मार्केटिंग कॉस्ट। एंड जब मार्केटिंग में आप परफॉर्मेंस से ब्रांडिंग पे जाते हो तो वो आपका सिटी लेवल पे होता है कि आपने एयरपोर्ट पे जगह ले ली या फिर आप सिनेमाज में ऐड चलाओगे, वो सब सिटी लेवल पे होता है, वो सब आपका स्पेसिफिक नहीं हो सकता कि स्टोर लेवल पे कर पाओ। तो इसीलिए हमारी जो मार्केटिंग एफिशिएंसी है, मार्केटिंग आरओआई है, वो एक सिटी पे फोकस करके काफ़ी अच्छी आएगी। तो इसीलिए हम लोग बैंगलोर और दिल्ली 2 सिटीज़ स्टार्टिंग में लिया था हमने, और वहाँ हमने 15-15 स्टोर्स डाले थे इन द फर्स्ट गो, एंड वी वेंट वेरी डीप देयर। एंड देन हम लोगों ने वहाँ काफ़ी मार्केटिंग, बीटीएल एक्टिवेशन, ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ करी थी टू क्रिएट अवेयरनेस इन दो सिटीज़। मुझे एक क्वेश्चन है, मैं जो सोचते रहता हूँ कि साउथ इंडिया में गोल्ड की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया? गोल्ड या ज्वेलरी की डिमांड? तो एक्चुअली ये क्वेश्चन का आंसर मैं भी काफ़ी टाइम से ही फिगर आउट कर रहा हूँ कि साउथ इंडिया में ज़्यादा क्यों है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। बट वन रीज़न दैट आई हैव आइडेंटिफाइड इज, इन जनरल आप अगर पर कैपिटा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो वो यहाँ काफ़ी डेंस है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। दूसरा, यहाँ पर जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक हम बात कर रहे थे कि किंगडम्स के पास में काफ़ी ज़्यादा गोल्ड एक्सेट्रा होता था, तो वो क्या हुआ था, क्योंकि इफ़ यू गो बैक टू द हिस्ट्री अगेन, तो वहाँ जब मुगल्स वगैरह और ये सब सारे जो भी इन्वेजन्स हुए थे हमारी कंट्री में, तो वो स्टार्ट नॉर्थ से ही हुए थे। वहाँ से लोगों ने एंटर किया एंड देन फिर नीचे नीचे साउथ में आते, तो वहाँ का जो वेल्थ था ना वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था, वर्सेस जब तक यहाँ पर चीज़ें पहुँचती तब तक वी गॉट, हमारा इंडिपेंडेंस आ गया था, पॉलिसीज़ आ गई थी, एक्सेट्रा आ गई थी। तो यहाँ पर ना गोल्ड का जो अवेलेबिलिटी भी थी, या जो लाइकलीनेस, जो लोगों की एक लाइकेबिलिटी भी थी गोल्ड की, वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्थ, बिकॉज लोगों के पास काफ़ी गोल्ड रहा है हिस्टोरिकली। तो आप यहाँ जैसे एक नॉर्मल साउथ इंडियन शादी में भी जाओगे, यू विल सी अ वुमेन वेयरिंग एटलीस्ट 1 kg इन नॉर्मल, इन अ रिच वेडिंग, एटलीस्ट 1 किलो गोल्ड तो इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल things, in a traditional wedding you will see a woman wearing. मतलब I've heard so many communities जहाँ पर ये होता है कि हाँ इतने किलो गोल्ड शादी में खर्च हुआ, इतने किलो गोल्ड उस शादी में खर्च हुआ। तो जनरली पेरेंट्स का माइंडसेट तो हाँ रहता है, विमेन का माइंडसेट तो चेंज हो गया है। अब जैसे मेरी बहन की शादी हो रही थी अभी, एंड आगरा से, हाँ, तो मेरे पेरेंट्स उससे कह रहे थे कि एक सेट ले ले कुछ अच्छा सा, तो उसने कहा नहीं मुझे कोई नहीं सेट चाहिए, मेरे को ना इसके बजाय 10 छोटे छोटे सेट्स दिला दो जो कि मैं ऑफिस या पार्टी में पहन सकती हूँ, rather than buying just one big set. तो women don't want to buy, if you ask the modern women, they don't want to buy 1 kg वाले वो heavy 10-15 लाख का सेट की जगह 1-1 लाख वाले 10 सेट चाहिए। 10 सेट उनको चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग ओकेजन्स में पहन सकती है उसको, राइट। तो वो माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा अभी आ गया है।
बट पहले तो वो रहता था कि हाँ 10-15 लाख का एक हैवी सेट ही ले और एक और इंटरेस्टिंग इंसाइट ये है कि पहले ज़्यादातर वुमेन होम मेकर होती थी इंडिया में। हाँ तो बाहर जब जाते थे तो शादी में गए या पार्टियों में गए, हाँ तो देन ओकेजन कम है तो हाँ उसलिए हैवी ज्वेलरी पहन ली। अब ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे जाना हो रहा है, ऑफिस जाना हो रहा है, हाँ या साथ साथ बच्चे को स्कूल वगैरह, तो दे प्रेफर वेयरिंग लाइट करेक्ट, ज्वेलरी विच इज़ डेली विच इज वेयरेबल। इनफैक्ट पहले जब औरतें जब ये इवेंट्स में जाती थी तो एक मेंटल परसेप्शन होता था कि मुझे हैवी ज्वेलरी पहननी है, मुझे ज़्यादा ज्वेलरी पहननी है क्योंकि इससे मेरे फैमिली का स्टेटस दिखेगा, मेरे पास फैमिली के पास कितनी वेल्थ है एक्सेट्रा है वो दिखेगी। आज से 10-20 साल पहले ऐसे ही लोगों के मेंटल बैरियर्स थे। वर्सेस अब ये हो गया है कि ये जो सूट मैंने पहना है इसके साथ कौन सी अच्छी ज्वेलरी लग रही है, कौन सी मिनिमल राइट वेट ज्वेलरी लग रही है, रैदर देन हैवी पीसेस पहनने के, वो परसेप्शन हो गया है। तो उस चक्कर में लोगों का अब ये नहीं रहा है कि मेरे को बहुत सारी ज्वेलरी पहननी है, पर मेरे को वो पहनना है जो मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। और आप ये भी देखोगे लाइक अभी जो नई मूवीज वगैरह भी आ रही है, नया फैशन ट्रेंड आ रहा है, और लाइट वेट ज्वेलरी विद साड़ी लुक्स अमेजिंग। मतलब वो एक बहुत ही क्लीन पॉइस लुक देती है राइट, कंपेयर टू अ वेरी हैवी लुक। वो सिर्फ एक ब्राइडल अफेयर रह गया है कि हैवी ज्वेलरी, काफ़ी सारी ज्वेलरी पहननी है। पर जो गेस्ट आते हैं वो प्रेफर करते हैं कि मिनिमल लाइट वेट ज्वेलरी साड़ीज के साथ पहनना, बिकॉज वो लुक एक काफ़ी अलग लुक आता है राइट। तो वो एक पूरा फैशन का ही रेवोल्यूशन टाइप भी हुआ है ज्वेलरी में, जहाँ पर वो हैवी ज्वेलरी से ट्रांजिशन होकर लाइट वेट ज्वेलरी पे आ गया। और इसको थोड़ा सा मॉडर्न मशीनरीज ने भी सपोर्ट किया। जैसे आज से 10-20 साल पहले ज्वेलरी लगभग सारी आपकी हैंडमेड होती थी। यहाँ पर कारीगर होंगे जो कि ज्वेलरी बनाएंगे, और इतना मैकेनाइज नहीं था वो पूरा प्रोसेस, वो पूरा हैंडमेड प्रोसेस था। बट पिछले 10 साल में काफ़ी मैकेनाइज्ड हो गया प्रोसेस। लाइक जो एक डाई भी बनती है ज्वेलरी की, पहले वो एक कारीगर एक वैक्स पे वो डाई बनाता था उसका नेगेटिव मेन ज्वेलरी का, फिर वो कास्ट होके ज्वेलरी पीस बनता था एंड देन पॉलिशिंग फिनिशिंग होती थी। अब वो पूरा प्रोसेस आप 3D प्रिंटर से बनाते हो, तो आप इतनी माइन्यूट डिटेलिंग पे जा सकते हो एक ज्वेलरी की। लाइक इवन अगर आपको एक बड़ा पीस भी बनाना है आप उसको बहुत लाइट वेट बना सकते हो। तो एंड देन व्हेन यू सेल दोज पीसेस टू द कंज्यूमर, तो उनकी प्रेफरेंस होती है कि ये 50,000 का है जो कि लाइट वेट है, हैवी वेट है जो कि 3 लाख का है, तो मैं इससे बेटर तो 50,000 का खरीद के 8 पीसेस खरीद लूँगी राइट, रादर देन व्हाई शुड आई बाय अ सिंगल पीस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट आपने शेयर करी कि जैसे आप तो अगर अपनी पहले टीम के बारे में बता दो कि जीवा की कितनी बड़ी टीम है। तो अभी करंटली वी हैव अराउंड 800 पीपल इन द टीम। और उसमें से डिज़ाइनर कारीगर कितने? सो वी डोंट डू एनी मैन्युफैक्चरिंग, ऑल आवर मैन्युफैक्चरिंग इज आउटसोर्स टू आवर मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स। एंड ये अभी हमारे इंडिया, चाइना, थाईलैंड, टर्की, इटली, इन 5 कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स, लार्जली इन इंडिया, बट वी ऑल्सो गेट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज। क्योंकि यहाँ पर ये भी होता है कि हर कंट्री की एक स्पेशलिटी है। लाइक इटालियन चेन्स आर नोन फॉर देयर क्वालिटी, they are the finest quality chains that you get, versus India is known for a lot of handmade work etc. China is known for cubic zirconia etc. तो हमारा पूरा जो procurement distribution है वो country wise quality basis पे distributed है। एंड जितनी भी बनती है फिर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के, तो ये मशीन मेड होती है ज्वेलरी या हैंडमेड होती है? तो अभी हम लोगों का तो इसमें जो पूरा प्रोसेस है, आज से 10 साल पहले एक ज्वेलरी को बनने में फ्रॉम द डाई टू द फाइनल पीस कुछ अराउंड 15-20 दिन लगते थे। वैसे एक डाई बनने में ही 6-7 दिन लग जाते थे। ये अब जो पूरा प्रोसेस है 4 दिन में हो जाता है ज्वेलरी बनने का प्रोसेस, बिकॉज आपका जो सबसे बड़ा एक लीवर है डाई, वो पूरा ऑटोमेटेड है। फिर उसके बाद कास्टिंग आप ऑटोमेटेड वे में करते हो। फिर जो फिनिशिंग होती है उसमें बस स्टोन प्लेसमेंट होता है जो मैनुअली करते हो, बट उसके बाद बाकी सारी फिनिशिंग्स जो होती हैं ऑल दैट इज़ ऑटोमेटेड। तो जो 15-20 दिन का प्रोसेस था वो अब 3-4 दिन पे आ गया है, विच इज़ वाई यू सी अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन गोल्ड जो कहते हैं मेक टू ऑर्डर भी बना देंगे हम लोग ज्वेलरी राइट। ऑल दिस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मैकेनाइजेशन इन द। और एआई भी कुछ रोल प्ले कर रहा है इसमें? अभी रोल नहीं आया नहीं, अभी एआई का इतना बड़ा रोल नहीं आया, बट एक्चुअली एआई का जो सबसे बड़ा रोल है, तो इस पूरे लीवर में, इस पूरे लाइफ साइकिल में एक और पार्ट होता है कि आप ज्वेलरी का 3D प्रिंट बनाते हो, जिससे फिर आप उसका डाई बनाओगे 3D प्रिंटर से। तो एआई के साथ में वो प्रोसेस बहुत फास्टर हो जाएगा, बिकॉज अभी क्या होता है, एक कोई बैठा होगा, देयर इज़ अ इलस्ट्रेटर पर्सन और
person who will be doing a 3D design on the computer. With the AI, you just need to plug 4-5 images of the product and वो model ही पूरा आपको 3D फाइल रेंडर करके AI दे डिज़ाइन देगा. बना देगी आपके AI लिए। डिज़ाइन बना देगी. तो वो 4 दिन है ना, वो 3 दिन हो जाएंगे आपके. फिर तो और मेक फास्ट टू हो जाएगा. ऑर्डर ज्वेलरी का मार्केट बहुत बड़ा बन जाएगा। कस्टमर के हाँ. लिए AI डिज़ाइन बनाएगी, कस्टमर चूज करेगा, 3D प्रिंट करेगी और फिर फटाफट 3-4 दिन मतलब लाइक डिलीवर हो जाएगा। अगर आप आज ऑर्डर करोगे तो 4 दिन में ज्वेलरी बन जाएगी और 7-8 दिन में आपके पास आ जाएगी ज्वेलरी. तो ये काफ़ी बड़ा है. इसमें बस ये है कि ये मार्केट बहुत बड़ा गोल्ड डायमंड में है, क्योंकि वहाँ पर 2 बड़े रीजंस हैं. एक तो द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री इज बिग. एक गोल्ड का स्टोर डलता है तो उसमें कम से कम 4 से 5 करोड़ की इन्वेंट्री तो आपको चाहिए, वरना कस्टमर आएगा और वो कहेगा तो बहुत खाली स्टोर है तो आई विल नॉट बाय फ्रॉम दिस स्टोर, राइट. तो इसीलिए एंड वो 4 से 5 करोड़ का कैपिटल एट स्केल विल बिकम मच टफ, राइट. विच इज़ वाई आप देखोगे तनिष्क और इन सबके फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं, राइट. उनका तो 40-50 करोड़ लगता है, इतनी इन्वेंट्री रखते हैं वो अपने स्टोर में. पर स्टोर 40-50 करोड़ की इन्वेंट्री रखनी पड़ती है उन्हें. टोटल इन्वेंट्री प्लस डिपॉजिट प्लस फिट आउट समवेयर बिटवीन 25 से 40 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट जाता है. तो इसलिए वो फ्रेंचाइजी वाला मोड लेते हैं इन्वेस्टमेंट का. बट गोल्ड के साथ एक इन्वेंट्री बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारे साथ इतनी बड़ी नहीं होती है. बट गोल्ड में क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ मेटल इतना बड़ा है, तो वहाँ इसका बहुत बड़ा रोल है. क्योंकि वहाँ अगर आप अच्छे 3D मॉडल्स बना पाते हो और बहुत फास्ट लोगों को सर्विस कर पाते हो, तो आपको इतनी बड़ी इन्वेंट्री नहीं रखनी. आप 20-30 लाख की इन्वेंट्री अपने स्टोर में रखोगे, आप लोग प्रोडक्ट्स के मतलब डुप्लीकेट्स इन ब्रास ब्रॉन्ज रखोगे और लोग अगर पसंद कर लेंगे तो आप उसको मेक टू ऑर्डर में बनवा दोगे. तो वहाँ बहुत बड़ी यूटिलिटी है. वर्सेस इन आवर केस वी डोंट कैरी दैट मच इन्वेंट्री. आपको कितने की इन्वेंट्री रखनी पड़ती है? हमारे एक स्टोर में लगभग 20-25 लाख की इन्वेंट्री जाती है कंपेयर टू देम. तो हमारे केस में वो इतना बड़ा इन्वेंट्री वैल्यू नहीं होता है. तो इसीलिए हमारे केस में जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो होता है कि इफ़ कस्टमर कम्स अप विद देयर ओन डिज़ाइन एंड देन फिर वो कहते हैं कि हमें इसका रेप्लिका चाहिए. उसमें हम लोगों को कॉपीराइट और IP इशूज़ का चेक करना पड़ता है पहले. जैसे यू कैन नॉट मेक अ डिज़ाइन इफ़ समवन ब्रिंग्स लाइक दैट, बट वंस दैट इज़ क्लियर तो वो प्रोसेस काफ़ी फास्टर हो जाएगा. एक और चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो डेमोन्स्ट्रेट करती है कि साउथ कितना बड़ा मार्केट है, साउथ इंडिया ज्वेलरी का. आप मूवी देखने जाओ PVR वगैरह, हाँ 95% एड्स सिर्फ ज्वेलरी के होते हैं. सिर्फ ज्वेलरी के होंगे. हाँ यू आर राइट. मतलब भरे पड़े होते हैं एंड काफ़ी सारे साउथ के बड़े ब्रांड्स भी हैं. हाँ. तो अगर आप मालाबार देखोगे तो वो साउथ से ओरिजिनेट हुआ, कल्याण साउथ से ओरिजिनेट हुआ, TBZ जो था वो साउथ से ओरिजिनेट हुआ, त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी. भीमा ज्वेलर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउथ, राइट. सेनको ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्ट एंड साउथ ऑल कंबाइंड. सो देयर आर मेनी ब्रांड्स which came from southern region versus north से सबसे बड़ा ब्रांड आई थिंक तनिष्क था which came from north and west, मतलब नॉर्थ और कोलकाता. तो यूनिवर्सल मान लो या मुंबई बेस्ड ठीक है लो. करेक्ट. मतलब तो उनका इनफैक्ट तनिष्क का भी हेडक्वार्टर बैंगलोर में है. ओके. तो होसूर रोड में उनकी फैक्ट्रीज हैं और उनका मेन ऑफिस भी बैंगलोर में. तो ट्रेडिशनली ऑल्सो मतलब ज्वेलरी का काफ़ी बड़ा मार्केट साउथ में होता था बिकॉज लोगों के पास काफ़ी डिस्पोजेबल इनकम भी होती थी एंड प्रेफरेंस भी ज़्यादा थी. तो वहाँ से यू विल सी अ लॉट मेनी ब्रांड्स कमिंग इन. जो आपने इनिशियल बात कही थी कि मुगल्स आए, मुगल्स ने सारी नॉर्थ की वेल्थ लूट ली पर वो साउथ पेनिट्रेट कभी कर नहीं पाए. हाँ राइट. और ब्रिटिश टाइम तक उनके राज खत्म हो गए थे. तो इसलिए साउथ हमेशा गोल्ड का आम आदमी के पास गोल्ड हमेशा रहा कभी. हाँ. जो तो इसका एक और पैरेलल ये भी है जितने नॉर्थ के टेम्पल्स हैं. हाँ. नॉर्थ में सबसे बड़ा मंदिर है काशी विश्वनाथ. हाँ. वो भी आके मुगल्स ने तोड़ा था. हाँ. तो फेमस स्टोरीज है वहाँ की किस तरह से शिवलिंग बचाया गया वगैरह. Yeah. बट साउथ में कभी मंदिर खंडित नहीं हुए क्योंकि हाँ. मुगल साउथ में आ नहीं पाए. यहाँ पर तो देर आर इतने सारे मंदिर हैं जो कि जिनका अपना ही आर्किटेक्चर है. हाँ. जो एक बहुत ही यूनिक आर्किटेक्चर और इतने प्रिजर्व्ड हैं वो अभी भी. वर्सेस नॉर्थ में, यू आर राइट, देयर आर वेरी फ्यू. तो तभी आप देखोगे नॉर्थ के किसी मंदिर पे गोल्ड नहीं चढ़ाते, ना ही हाँ. गोल्ड से बने हुए मंदिर हैं. साउथ के कितने सारे मंदिर, बालाजी, हाँ. और भी बहुत सारे, तिरुपति सबरीमाला, मंदिर उसमें तो गोल्ड से भरे हुए मंदिर हैं. उनका तो काफी बड़ा गोल्ड का रिजर्व हाँ, है. हाँ. इनफैक्ट उनका तो बहुत ही बड़ा उसमें इतना कंट्रीज चल जाए. करेक्ट, एग्जैक्टली, कंट्रीज चल जाएंगे उस रिजर्व में. तो वो तो बहुत ही बड़ा गोल्ड का रिजर्व. तो वो पिछले 200-300 साल उससे भी पहले से कंपाउंड होते हुए गोल्ड की वेल्थ है, क्योंकि नॉर्थ को कभी ये मौका मिला ही नहीं. करेक्ट
करेक्ट यू आर राइट एंड एक और रीज़न होता था, तो एक तो ये मुगल्स वाला था, दूसरा ये था कि साउथ की कनेक्टिविटी पोर्ट से काफ़ी अच्छी रहती थी, तो काफ़ी सारे लोग जो बाहर दुबई और इधर उस एरिया से आते थे मिडिल ईस्ट से, क्योंकि वहाँ गोल्ड ज़्यादा मिलता था, तो वो इजीली साउथ से ही एंटर करते थे, तो पैसेज जो था ना गोल्ड का वो भी यहीं से ही था काफ़ी ज़्यादा साउथ एक से। दो और ऑब्जर्वेशन है, नॉर्थ में क्या है, लोग शादियों पे ज़्यादा कम खर्च करते हैं, गोल्ड पे कम करते हैं, क्योंकि हाँ उस तरह का वैसा रहा नहीं, गोल्ड को उतनी हाँ इम्पोर्टेंस मिलनी। जबकि साउथ में शादी में बिल्कुल मिनिमल खर्च होगा, फिर आपको नॉर्मल केले के पत्ते पे अमीर से अमीर फैमिली आपको खाना खिला देगी, चावल या वगैरह। गोल्ड पे सबसे ज़्यादा खर्च होगा। अरे तो दैट इज़ राइट, नॉर्थ की शादियों में आप जाओ तो मतलब सारी फैंसी फैंसी हाँ तरीके के आपको प्लेट्स मिलेंगे, हाँ आपको स्टॉल्स, शादियों में बहुत पैसा खर्च होता हाँ है, मतलब प्लानिंग होती है और आपके हर तरह के पैकेज होंगे, एक होगा सस्ता पैकेज, एक होगा मीडियम, एक होगा एक्सपेंसिव, एक होगा पूरा लूटने वाला हाँ पैकेज, इट सब तरह के पैकेजेस मिलेंगे। एंड मतलब आई थिंक वहाँ के ऊपर लोगों के दिमाग भी थोड़ा, पेरेंट्स के माइंड भी ऐसे इंजीनियर्ड है कि शादी इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट, तो हम पूरा पैसा वहाँ खर्च हाँ करेंगे अच्छे से, राइट। वो वहाँ पर इतना सोचते भी नहीं है कि हाँ बचाना है, वर्सेस यहाँ पर शादी में आई थिंक गिफ्ट्स ज़्यादा एक्सचेंज होते हैं कंपेयर टू खाने पर ज़्यादा खर्चा करना, या तो यहाँ पे सारी शादी हाँ मंदिरों के आंगन में होती है, हो मंदिरों के जो जाती है। लगे हुए हॉल में होती हैं। करेक्ट नॉर्थ यहाँ में पर इतना मंडप इज नहीं। अ बिग बिजनेस। हाँ वहाँ तो मतलब हर कोई जो भी वेडिंग बिजनेस में है ना नॉर्थ में, हर कोई एकदम पैसे छापता है, राइट। वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बजट जाता है, तो दैट इज ऑल्सो योर राइट वन ऑफ द रीजन। साउथ में गोल्ड को इम्पोर्टेंस इसलिए भी दी जाती है, गोल्ड इज सॉर्ट ऑफ दिस डिवाइन, क्योंकि यहाँ पे भगवान को गोल्ड चढ़ता है। हाँ नॉर्थ में कभी आप ये नहीं दिखोगे कि भगवान को भगवान गोल्ड। को गोल्ड चढ़ता है, यस यस तो यू आर यहाँ राइट, तो दैट ज्वेल इज ऑल्सो अ बिग रीजन या। तो बहुत बहुत स्टार्क डिफरेंसेस हैं। हाँ एंड इसीलिए यहाँ का मार्केट तो बहुत ही बड़ा है, यहाँ कंजम्पशन गोल्ड का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मेरे ख्याल जितनी भी आपने चारों पांच कंपनीज की बात करी है, मेरे ख्याल से हर कंपनी 10,000 करोड़ की तो एटलीस्ट होगी। करेक्ट, मिनिमम उनका रेवेन्यू तो इनफैक्ट सभी पब्लिक लिस्टेड है। हाँ मालाबार यहाँ लिस्टेड नहीं है, वो दुबई में लिस्टेड हाँ है। तनिष्क यहाँ लिस्टेड है, कल्याण यहाँ लिस्टेड है, तो इन सब का रेवेन्यू आप अगर देखोगे तो सब अपवर्ड्स 5-10 हज़ार करोड़, मतलब तनिष्क इज 25-30,000, इट्स 30,000 प्लस करोड़ ईयरली रेवेन्यू। मालाबार भी 25-30 हज़ार करोड़ की रेंज में, आई थिंक कल्याण इज एट 10,000 प्लस करोड़ रेंज, तो एवरीवन इज ह्यूज, ऑल ऑफ देम आर बिग। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ मैं, राकेश झुनझुनवाला इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया। करेक्ट। तो उनकी 75% वेल्थ उन्होंने टाइटन का स्टॉक विच इज तनिष्क हाँ में 15 करोड़ के करीब लगा दी थी 2000 में। हाँ जब वो एक्सपायर हुए 2020 इसमें, आज से 1-2 साल पहले, तो वही वेल्थ वॉज अराउंड आई थिंक कुछ 10,000 to 15,000 करोड़। हाँ या दे मेड अ, आई नो, उन्होंने तो काफ़ी पैसा बनाया था इसमें, हाँ, राइट। तो उनका जो सारा अगर पैसा बनाया था इन्वेस्टर, वो सब ज्वेलरी बिजनेस से ही बना है। एंड द ग्रेट थिंग इज कि देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द इंडस्ट्री इवन नाउ, मतलब अगर आपको लगता है कि अगर अब पूरा मार्केट ग्रो होगा, कैन तनिष्क बिकम लेट्स से फ्रॉम अ 5 बिलियन रेवेन्यू कंपनी है ना, 70 बिलियन मार्केट कैप टू अ 700 मिलियन मार्केट और बिलियन मार्केट कैप कंपनी? सो आप मतलब सो व्हाट आई थिंक इज कि अभी तनिष्क का 5% मार्केट शेयर है हाँ पूरे उसमें, इजीली 25% मार्केट शेयर तो आफ्टर 10-20 ईयर्स हम लोग देख सकते हैं इसको बनते हुए, और मार्केट भी 100 बिलियन से बढ़ के अगर 125-150 बिलियन होता है। और उस पर बिकॉज पूरा मार्केट 10-12% ऑर्गेनाइज्ड है, जो कि आज से 6 साल पहले 7 साल पहले 4% ऑर्गेनाइज था, तो द पेस एट विच द मार्केट इज ऑर्गेनाइजिंग इज वेरी फास्ट, all the organized jewelry companies will grow, ओके। right? And तो किसी को अगर ETF खरीदना तो सारी ज्वेलरी कंपनी खरीद लो। exactly, and in fact ये आप नोट करोगे, if you see all their revenues, right, if you plot their revenues, the only issue in the jewelry business has been the corporate governance. That has been a big issue in the traditional jewelry companies. वहाँ पर थोड़ा corporate governance का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता था, people used to use it for different reasons rather than for doing jewelry. But if you look at all the clean jewelry companies, जो सब clean और trusted way में operate करते थे, all of them have been growing, right? So yes, बहुत बड़ा market, and it is going from unorganized to organized. So even the market in itself for organized jewelry is growing by 15% plus.
year on year rate. So yeah, massive opportunity. एंड इसे सिर्फ टीयर 1 में ही ऑर्गेनाइज हो रहा है या टीयर 2 टीयर 3 में भी ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो ये सब जगह पे हो रहा है. इनफैक्ट हमारे साथ में वन ऑफ आर टॉप 5 स्टोर्स इज इन हजरतगंज ये कहाँ इन लखनऊ. ओके. हमारा मतलब वो हमारा टॉप 5 स्टोर्स में आता है. एंड इनफैक्ट तनिष्क के आप टॉप 10 स्टोर्स देखोगे तो आई थिंक उनके पटना के 2 स्टोर्स हैं, लखनऊ का 1 स्टोर है. मोर देन 70-80% ऑफ देयर टॉप 10 स्टोर्स आर इन टीयर 2 टीयर 3. It is not just a tier 1 phenomena, it is a tier 2 tier 3 phenomena across, largely because tier 2 tier 3 में aspirations बहुत high है. And this is what we have also realized, बहुत high aspiration है वहाँ की audience में. उनके पास पैसा भी है, काफ़ी पैसा है, because manufacturing से या traditional businesses से लोगों पर पैसा है, but channels नहीं है खर्च करने के. और जैसे यहाँ पर अगर आप पे पैसा है तो आप ऊबर ओला से ट्रांसपोर्टेशन में इन सब में ही आपका इतना पैसा खर्च हो जाएगा. फिर उसके बाद रेंट इतने हाई होंगे, उसके बाद एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव है. तो आपके पास एक लिमिटेड बजट होगा टू स्पेंड ऑन लग्जरी नीड्स. बट वहाँ पर एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर टू मेट्रोज. इनकम लेवल्स भी डिसेंटली हैं फॉर गुड फैमिलीज़, और बाकी और खर्चे खास है नहीं. एवरीवन हैज़ हाउस देयर, मतलब टीयर 2 टीयर 3 में. तो वहाँ एस्पिरेशन हाई है, पैसा भी ज़्यादा है, बट उन पर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस नहीं है. तो विच इज़ वाई हमारी लास्ट 1 साल की जो ऑनलाइन भी ग्रोथ आई है वो पूरी टीयर 2 टीयर 3 से आई है. एंड ऑफलाइन में भी जो भी हमने स्टोर्स डाले हैं टीयर 2 टीयर 3 में, ऑल ऑफ देम आर डूइंग ग्रेट. एंड तनिष्क के भी आप अगर, तनिष्क बीइंग द गोल्ड स्टैंडर्ड, आप उसके भी अगर टॉप 10 स्टोर्स देखोगे उसमें से 8, आई एम फॉरगेटिंग नंबर, बट 7 to 8 स्टोर्स आर फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3. बट आपके स्टोर्स ये हैं कि कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड है? हाँ. तनिष्क में दे आर, इट इज़ अ फ्रेंचाइजी ऑपरेट, वो फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेट, बट इट डजेंट मैटर. अल्टीमेटली तो ब्रांड ही होता है उसमें. कस्टमर के लिए वो तनिष्क है, हम जीवा हैं. वो इन्वेस्टर्स के लिए हो गया कि किस में कैपिटल लग रहा है, किस में कितनी रोसी आ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट कंज्यूमर के लिए तो या सेम है. तो थैंक यू सो मच यशेंद्र, बहुत मजा आया पॉडकास्ट. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. काफ़ी मज़ा आया. थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर.